कॉर्पोरेट आर्म में अब हम बात करते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की। 1979 में शुरू हुई कंपनी सभी तरीके के अपैरल के डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का काम करती है। कंपनी की सालाना क्षमता देखें तो 3.6 करोड़ पीस कपड़े बनाने की है। कंपनी के पास 20 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये 50 से ज़्यादा देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। आज चलते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से, हम मौजूदा ट्रेंड, आगे के प्लान्स, कैपेक्स और आउटलुक क्या रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। एमडी हमारे साथ सिवा गणपति जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। आपको सर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और मैं ये जानना चाहूँगी इस वक्त कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की डिमांड देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में फॉर योर कंपनी। ऑफ कोर्स सीजनली ये वीक क्वार्टर होता है, बट आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे थे अब तक, और किस तरीके का ट्रेंड आप कहेंगे बिजनेस को लेकर, आउटलुक क्या है? धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। द ट्रेंड फॉर C23 calendar 23 will depend on how the markets perform in 23. When I say markets, मैं the western markets को allude कर रहा हूँ। US, यूरोप, इन मार्केटों में कैसे डिमांड पैन आउट करेगा, उसके हिसाब से हमारा भी डिमांड आएगा। So the feeling I get is that while Europe has been weak in 22 thanks to Ukraine war, over a period of time they'll start coming out of it somewhere towards the later half of 23. US में भी अभी थोड़ा सा inflation के कारण थोड़ा recessionary trends हैं। 23 will be slightly muted from an end retailer standpoint. So demand may be soft in the early half of 23, but I feel that in the second half we should start seeing a uptick in demand. That is my understanding of the situation. So far, Gokaldas has done very well in the first half of this year. In the third and the fourth quarter, the third quarter, while we will probably try to be at par with last year's revenue, I would think that the softened state of demand will be there for the second half of this year, and उसके बाद हम slowly first half of next year में थोड़ा सा uptick देखेंगे, और second half onwards, I think we will have a very, very strong growth. That is how I see the market conditions panning for ourselves. तो ये ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मार्केट पर और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है किस तरीके की ग्रोथ है, बट प्रोजेक्शंस बता रहे हैं सेकंड हाफ विल बी अ स्ट्रॉन्गर पीरियड फॉर द ग्रोथ। आप जब बता रहे हैं आपकी कंपनी में सर आपने सिग्निफिकेंट कैपेक्स लाइन अप किया गया है, क्या प्लान्स हैं सर, और कहाँ से इतनी कन्विक्शन है आपको कि ये कैपेक्स आप पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? यू ऑलरेडी हैव कैश या बैंक बैलेंस ऑफ अबाउट 370 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। तो जी, so we don't have a problem of financing the capex. So we have adequate cash in hand, as well as we have adequate cash generation. So every quarter we are adding to the kitty as well. So वो कोई problem नहीं है. Demand is the issue, and as I said, if I foresee that going forward, the long-term demand for the company and the country is very strong, then मैं तो कैपेक्स को कमिट करना ही चाहिए हमें, क्योंकि फैक्ट्री लगा के फैक्ट्री को रैंप अप करने में ही 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है। So इस दौरान the demand should start picking up very strongly. As I said, if the demand starts picking up from second half of the next financial year, we should be continuing to invest in capex. So we are committed to it. We want to grow, and we are convinced that the demand for India and a strong operator like Gokaldas continues to remain strong going forward. So we are committed to the capex. Okay, आप committed हैं capex के लिए, और growth पर भी आप अपबीट है, आगे ग्रोथ अच्छी दिख रही है ऑफ कोर्स आगे सेकेंड हाफ जैसे आपने बताया और एक्सप्लेन किया। सर एक्सपोर्ट्स जो आपके ज़बरदस्त होते हैं 50+ कंट्रीज़ में, एंड इन फैक्ट 22 अराउंड 80% आपके रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट से आते हैं, तो क्लियरली एक बड़ा आपका एक एक्सपोजर है एक्सपोर्ट्स को लेकर। और आपने कहा जैसे सिचुएशन दूसरे देशों में होगी वो बहुत मैटर करेगा आपके बिजनेस को लेकर, लेकिन करंट मिक्स जो है क्या वो आप कुछ बदलेंगे सीइंग द सिचुएशन आउटसाइड? और अभी अगर रिसेशन में जाते हैं कुछ कंट्रीज़ तो कितना असर उसका पड़ सकता है? कैसे आप अपने आप को डी रिस्क कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से? श्योर, हम मार्केट्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं, कस्टमर्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं, ताकि डायनामिकली अगर कोई चेंज करना है तो हम पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं।
तो फिलहाल हम यूएस सेंट्रिक हैं, क्योंकि यूएस मार्केट इज द मोस्ट रेजिलिएंट ऑफ ऑल द मार्केट्स. इनफैक्ट 22 में भी आप देखेंगे तो यूएस रिटेल सेल्स हैड अ ग्रोथ ओवर 21. तो इसके कारण हम यूएस सेंट्रिक बन गए. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, जब इंडिया साइंस एन एफटीए विथ यूके फॉर इंस्टेंस, we will see that more and more demand will come from UK, because there will be clearly a 10% advantage for India vis-a-vis China, which will go with full duty. तो इसका फायदा उठाने के लिए हमें प्रो यूके या यूके ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, which is what we are working on. So going forward, depending on the structural situation in the markets as well as opportunities that come up, we will pivot to the appropriate markets. So थोड़ा यूरोप सेंट्रिक या मेनली यूके सेंट्रिक आगे चल के हम शिफ्ट करेंगे थोड़ा. ओके, थोड़ा आप शिफ्ट करेंगे इन मार्केट्स में एक्सपोजर बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अभी तो आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ यूएस मार्केट से ही आ रही है, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सर थोड़ा सा इलैबोरेट कर पाएंगे किस तरीके का फोकस होगा, कौन से न्यू मार्केट्स आप एंटर करेंगे, यूरोप से अभी कितना रेवेन्यू आता है और वो कितना बढ़ सकता है इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है सर? देखिए, यूरोप अब यूरोप का कंट्रीब्यूशन केवल 4% है हमारे टर्नओवर का. And 5 years back, or not even 5 years, 4 years back, we were at about 20%. So हमें स्कोप है, हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं कि हम उसको बढ़ा सकते हैं. तो हम देखेंगे थोड़ा, मेरे हिसाब से maybe our exposure to Europe from a very minuscule 4%, we will go to about 8%, 7-8%, but it'll take a year or two, but that is the direction we will go. But if the opportunity comes, we may even pivot a bit more faster. So it all depends on how the situation unfolds in the year ahead. But by and large, Gokaldas will still remain US centric. We have found that market to be strong. We have found a very good traction for us in the market. So वो continue करेगी. Fair enough. तो यूएस मार्केट पर फोकस रहेगा, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है, वो कंटिन्यू रहेगा. सर, रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमने थोड़ा जो कूल ऑफ, पहले ऑफ कोर्स बड़े थे, उसके बाद अब कूल ऑफ हुए हैं, उसके वजह से मैं जानना चाहूँगी किस तरीके के मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी आपने लास्ट, अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 11.5% मार्जिन्स आपके आए थे. यू थिंक ये सस्टेनेबल नंबर है, इससे बेहतर हो सकते हैं अब, क्योंकि कूल ऑफ हुआ है तो एंड डिमांड इज इंटैक्ट, तो आप पास ऑन कर पाएंगे? Sure. So by and large, हमारे लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट पास थ्रू है. So जब कॉस्ट बढ़े तब भी हमने पास थ्रू किए थे, और जब कॉस्ट घटता है तब भी हम पास थ्रू करते हैं. तो अभी overall demand globally, since it is soft, there is a fall in raw material prices also, which works to our advantage. तो उसका benefit हम definitely लेना चाहेंगे. As far as margins are concerned, we will maintain our margins even in this weak market conditions. And as I've always maintained, in the longer run, we will see a 1% plus kind of 1.5% improvement in margin. But in the short term, I think, we will definitely maintain the margins that we have always maintained. सर, दो सवाल आपसे ये जानना, पहला तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपने बात की कि कंपनी ऑफ कोर्स एक 20 से 25% की ग्रोथ देख रही है अगले ओवरऑल, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, लेकिन क्या एग्जैक्ट प्लान है, क्योंकि ये मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, ग्लोबल अपैरल मार्केट अगर हम देखें, और इंडिया का भी रोल बहुत छोटा है, और आप अगर हम देखें तो आपकी कंपनी में अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ से ग्रो करने की. आप, आई बिलीव इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, $250 मिलियन सर, इतना है आपका साइज़. तो क्या यहाँ से ग्रोथ देखते हैं, कब तक एक रीजनेबल साइज़ की आप कंपनी बनेंगे, क्या टारगेट्स हैं, क्या अप्रोच रहेगी कंपनी की? तो देखिए, ग्लोबल अपैरल ट्रेड 500 बिलियन की है, एंड इंडिया शेयर ऑफ दैट इज 16 बिलियन. तो वैसे ही इंडिया इज वेरी स्मॉल. इफ यू लुक एट चाइना, इट्स अबाउट 130+ बिलियन. So they are much bigger. Bangladesh is almost 2 times that of India, and Vietnam is also 2 times that of India. So there is a huge scope for Indian exports in this sector to go up. Government is also supporting this sector quite a bit, because वो भी जानते हैं कि ये लेबर इंटेंसिव है, काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने से, etc., etc. And people like us who are large established players who can compete with the best in the world, we can actually drive growth. So, the numbers that you talked about, 20 to 25% YOY growth, is quite possible in normal years, and we should be trying to do that.
There may be exceptions when there are recessions in the global industry, but that will be all short-lived, and we will bounce back with strong growth. So sustainable growth percentage तो यही है आप जो कह रहे थे, और हमारे टारगेट ये है कि हम कंटिन्यू करते रहेंगे. We will drive aggressive growth. So why should we even stop at even doubling? We can go keep growing aggressively for the foreseeable future because opportunity is very large in this space. Sure. तो $1 बिलियन की कंपनी कब तक एक्सपेक्ट करें सर आप बन सकते हैं? मैं डेट कह नहीं सकता हूं क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल्स हमारे हाथ में नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करेंगे तो ये CAGR के बेसिस से हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि हो जाएगा. ओके सर, FTAs को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग एक जो इंडिया का रोल है और यहाँ पर अपैरल मेकर्स और आपकी कंपनी को खास करके इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है. तो मुझे ये समझना है सर, FTA जो साइन किए इंडिया ने विद मेजर इकोनॉमीज, ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी और आपको ये कैसे हेल्प करेगा? हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की, यूके में भी बातचीत हो रही है. करेक्ट. So UK FTA is the most interesting one because it's a very large market and it will drive a lot of opportunities. So UK imports almost 6-7 billion from China plus Bangladesh put together, probably even more. So there is an opportunity for some diversification for UK-based players who are already manufacturing a lot in Bangladesh because they will get equal duty-free access from India. And what is happening from China, will suddenly become more expensive vis-a-vis India because India will become 10% cheaper. So मेरे हिसाब से, UK FTA sign होने के बाद Indian industry itself can grow by 1.5 billion, which can drive growth for the sector. So it's a good step in the right direction by Government of India that Australian FTA, उसके बाद UK, UAE FTAs. There's even a discussion with Canada. So all of these are step in the right direction. It will help growth of the manufacturing sector and create employment growth also. ओके, तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सेक्टर को भी मिलेगा और आपकी कंपनी भी इसको लेवरेज कर पाएगी. क्विकली सर, बजट आ रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें? ऑब्वियसली सरकार बहुत फोकस्ड है स्पेस पे, PLI स्कीम्स भी अनाउंस हुई हैं, तो क्या लुकआउट कर रहे हैं आप पर्टिकुलरली सिंस यू आर अ बिग एक्सपोर्टर? So I hope that the second PLI scheme, which is in the works, get announced, and that generates a lot more capital formation in the sector. Secondly, ROSCTL we had announced till 2024. So this budget they did not do anything. But going forward, एक long-term signaling के तौर से, उसका एक stable regime अगर beyond 24, if the government indicates, that will be nice. So that we can plan our future growth with the comfort that whatever policy regime that we have is intact and supportive of the sector. ओके, फेयर इनफ. तो जो अनाउंसमेंट्स हैं ये ऑफ कोर्स हम उम्मीद करेंगे इस बजट में आए जो सेक्टर को हेल्प करेंगी आगे, स्पेशली एक्सपोर्टर्स लाइक यू गाइस जो अपैरल में बहुत बड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके का बिजनेस है इस वक्त और क्या है आउटलुक. तो